Ganpati. How are you all? Yes, you all are fine and doing good. Great job. And celebrating so many festivals in this August month. We celebrate lots of festival, and one more. Your favorite festival is going to come. Is that Ganesh Chaturthi? Yes. This time you are at home, so you can prepare your own Ganpati, है ना? Don't use clay, use soil, मिट्टी का यूज करके you will prepare गणपति जी, है ना? Because जब भी हम गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो जो आप clay यूज करते हो, it pollute our rivers, वो हमारी नदियों का जो जल होता है उसे गंदा कर देते हैं. That's why don't use clay, use soil, मिट्टी का यूज करना है, ठीक है? You can use मुल्तानी मिट्टी, right? So now we already started our chapter number 4 house. We already started our chapter number 4 house, right? You have seen the lectures which is related to house, right? Now first tell me one thing. We need a house to live in, right? You all are agree with me? Yes, you all are agree with me. If we don't have house, where we will stay, where we will live, है ना? Before starting our lecture, first I want to tell you some information. I want to tell you something is that students, those who are not watching the videos continuously, those who are not sending their replies continuously, please send your replies, right? And this time which teacher called your notebook in school campus, है ना? We all are checking your notebooks, we all are doing the correction in your notebooks, right? So keep your notebook very properly, cover it nicely, put the name slip on your notebook, and your notebook should be presentable. Don't forget this, है ना? So chapter house we already started. In this chapter you will learn 3 things. First, different type of houses and roofs, and second, special feature of a good house, and third, people who build a house, right? So you will learn all about these 3 things. What are these? First one is different type of houses and roofs, second one is special features of a good house, and third one is people who build a house, right? Now first I will take a jhatpat recap, a quick recap. Why I am always taking recaps? Because students, those who are not watching regularly, they can understand, they can get the connectivity with the lecture, they can understand what is going on in EVS, which chapter, what learning, okay, right? So first, once again I will read these 4 lines, then I will give a little explanation. We need a house to live in, right? Very correct, very much. If we don't have house, where we will live? अगर हमारे पास घर नहीं होता, हम कहाँ रहते, कहाँ जाते, है ना? I already told you, early men they don't have house. जो पुराने समय के इंसान थे ना बेटा, they don't have their house, so but they want to protect themselves from all the seasons. Then they used caves, वो गुफाओं का इस्तेमाल करते थे, वो गुफाओं में अपने आप को सुरक्षित रखते थे from wild animals and the seasons, है ना? Members of a family live together in a house. Yes, it is very much correct. We all are living in our families, है ना? We can't live without our family. It is very difficult to a human being to live your life without your family. It is very difficult to us. That's why all the family members are living together in house. House protect us from heat, cold, rain and strong wind. Yes, it is very much correct. It is very much right. House protect us from all the seasons, है ना?
It also keep us safe from the thieves and the wild animals. I already explained you all things about wild animals. Wild animals means animals those who are living in forest. They cannot live with us, है ना. They are very dangerous. That's why they are living in jungle. And jungle there is no rules and regulation. There is no कानून, है ना. That's why they all are living in the jungle, है ना. And we get hurt from their side. They can eat up. वो हमें खा सकते हैं. They are very dangerous, है ना. So house give us protection from wild animals and thieves also. Thieves means the bad people. जो चोर लोग जो चोरी करते हैं, बुरे काम करते हैं, है ना. I already explained you about when we will go on bed at night. We closed all the doors. We always close the doors and the windows. Whatever, how many door we have at our homes, how many windows we have at our homes, we are closing before going on bed. सोने जाने के पहले हमेशा हम अपने घरों के सारे खिड़कियां और दरवाजे बंद करते हैं. Why? Because we need protection from thieves also, है ना. Thief can get hurt. वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं. वो हमारी धन दौलत तो लूट ही लेते हैं, वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन दे कैन गेट हर्ट. वो हमारे को शारीरिक रूप से भी, फिजिकली भी वो हमें हर्ट कर सकते हैं. दैट्स वाई वी क्लोज ऑल द डोर्स एंड द विंडोज बिफोर गोइंग ऑन बेड एट नाइट, है ना. बिकॉज वी वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, वी वॉन्ट्स टू प्रोटेक्ट आवर फैमिली फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स, फ्रॉम द थीव्स. वाइल्ड एनिमल से भी ज़्यादा खतरा चोरों का होता है. वाइल्ड एनिमल्स तो दे आर लिविंग इन जंगल. ऐसा बहुत कम सुनने आया कि कोई जंगली जानवर घर में घुस गया है. इट हैपन्स, बट इट हैपन्स रेयरली. बट चोरों का डर तो हमेशा होता है. इसलिए दिन में क्या, रात के अलावा हम दिन में भी अपने दरवाजे को बंद रखते हैं कई बार, राइट. सो अ हाउस, वी नीड अ हाउस टू लिव इन, है ना. ऑल द फैमिली मेम्बर्स आर लिविंग टुगेदर इन वन हाउस. House protect us. House gives us protection from all the seasons, right? Whether it is hot, cold, rain, winter, whatever season is there. And house gives us protection from wild animals as well as thieves also. Can you think something that a house can protect us from, है ना. See, now we human beings need a house to live in, ठीक है. But what about animals? हर एक को घर चाहिए होता है. आपने कभी इस बारे में सोचा है? एनिमल्स ऑल्सो रिक्वायर्ड अ हाउस. एनिमल ऑल्सो नीड अ हाउस. बर्ड्स ऑल्सो नीड अ हाउस, है ना. दैट्स वाई बर्ड्स आर मेकिंग द नेस्ट. इसलिए जितनी भी बर्ड्स होती हैं वो नेस्ट बनाती हैं. दे प्रोटेक्ट देयर सेल्फ, दे प्रोटेक्ट देयर बेबीज इन दैट नेस्ट, है ना. ऑल द एनिमल्स ऑल्सो हैव देयर हाउस एज लाइक अस. They have their babies. उनके भी बच्चे होते हैं. They wants to protect their babies also. That's why they all need house as like us, है ना. As like us, they also need a house. Are you agree with me? Am I right? Yes. As like us, as like human being, animal also need house. Because house gives protection to everybody, whether it is an animal or human being or any bird, है ना. Right. So here some names are given which I will going to read for you. But before this reading, I already sorry. Before starts giving you some information, I told you this. I already explained you when you was in class 1. ठीक है. So whatever is written over here, once again I will read for you. Then I will explain to you. Animals also need a shelter to live in. Yes. See, we all are living in house. है ना. We call that particular place is house. उस जगह को हम घर बोलते हैं, ठीक है. But जो एनिमल्स होते हैं ना बेटा, एनिमल्स का प्रॉपर कोई घर नहीं होता. उनको भी घर की ज़रूरत होती है, ठीक है. लेकिन हम उनके घर को घर नहीं बोलते हैं, है ना. घर कौन सा होता है? घर वो होता है जिसका एक प्रॉपर एड्रेस हो, ठीक है. घर का एक प्रॉपर एड्रेस होता है कि आपकी कॉलोनी, सपोज आरव बिल्लोरे,
आरब बिल्लोरे के घर का ऐड क्या है, ब्रज विहार कॉलोनी, ठीक है, उसके मकान का नंबर है 709, ठीक है। सो ये आरव का प्रॉपर एड्रेस हुआ, ये मकान नंबर हुआ। इसके थ्रू दिस एड्रेस एवरीबडी कैन फाइंड आउट द आरव्स हाउस, एवरीबडी कैन easily find out the Arab's house, है ना, but we cannot find out that lion's house, dog's house, है ना, then the hen's house, bird's house, they don't have address, they don't have particular address कि नहीं फलाना शहर आपको जंगल के उस कोने में मिलेगा, लेफ्ट साइड से राइट पे जाना और ईस्ट में जाना तो आपको वो वाले शहर जो है ना उसका घर मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, अगर हमें आरब का घर ढूंढना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम बोलेंगे नहीं आरब तो ब्रजविहार कॉलोनी में रहता है। आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, आई डोंट नो व्हाट इज द एग्जैक्ट एड्रेस ऑफ आरब बिल्लोरे, मुझे ये नहीं पता है कि आरब के घर का एड्रेस क्या है। आई एम गिविंग यू अ सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है। इफ वी वांट टू फाइंड आउट any house, first we will go that address, we will go through that address, हम उस एड्रेस को सबसे पहले देखते हैं कि हाँ वो किस कॉलोनी में रहता है, कौन से शहर में रहता है, किस कॉलोनी, सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कौन से शहर में रहता है ना। देन उसके बाद वी विल फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर कॉलोनी, देन वी start searching that the particular makan number, what is the address, that is the permanent address, है ना। So everybody has permanent address, हम सबके पास our own address, हमारे घर का एड्रेस है, but animal don't have address, that's why animals where they are living we are not calling their houses, they are using the shelter, उनके घर को हम घर नहीं बोलकर हम उसको शेल्टर कहते हैं। we human beings are using house, we human beings are using home, है ना, बट एनिमल्स के लिए हम हाउस या होम वर्ड यूज नहीं करके शेल्टर वर्ड यूज करते हैं। शेल्टर मतलब शरण लेना, ठीक है। पानी गिरा तो ये गुफा के नीचे शेर छुप कर बैठ गया, डॉगी है वो किसी पत्थर के पीछे जाकर थोड़ा सा एरिया कवर करके छुप कर बैठ गया, है ना, तो ये शेल्टर होता है बेटा। ये क्या होता है, दैट इज कॉल्ड शेल्टर, ये शेल्टर होता है, शरण में जाना। पेड़ के नीचे खड़े तो पेड़ की शरण हो गई, है ना। मान लो कोई ऐसी गुफा है, ठीक है, मान लो कोई ऐसी गुफा है जिसमें ऊपर की तरफ पत्थर है, ऊपर से बारिश आ रही है, हमें बारिश नहीं लग रही, है ना, तो देन वी गॉट द शेल्टर, उसका शेल्टर मिली, शरण मिली, ठीक है। So animals are not using house, animals are not using, for animals we are not using word house, for animals we are not using word home, we are using word shelter. Understand the meaning of this word shelter? Yes, animals need a shelter to live in, right? A dog lives in where? A dog live in kennel, a horse live in stable, a lion live in den, a cow live in shed, a bird live in a nest, and hen lives in coop. These all the names I made you learn in class 1. When you was in class 1, I already made you learn about all these things. ठीक है? Now I am going to turn the page and I am going to explain you about these types of houses, right? In this we will learn the different kinds of houses. Yes, you can see this. What is this? You can see this picture number 1. What is this in this picture number 1? A hut. You can see a picture of a hut. Hut is also a type of house. And okay, and then number 2, a bungalow. Have you seen this picture number 2? What is that? What is the name of this? We cannot call this hut, we cannot call this house. Then what is the name of this particular place? The name of this particular place is a bungalow. इसको हम झोपड़ी नहीं बोलेंगे, इसको हम घर नहीं बोलेंगे. We are not calling hut, we are not calling house.
ठीक है, देन व्हाट वी कॉल दिस अ बंगलो, वी कॉल दिस अ बंगलो, है ना. एंड इन पिक्चर नंबर 3 यू कैन सी एन अपार्टमेंट. अपार्टमेंट मीन्स a building where many peoples are living together but they are living in different apartments, they are living in different apartments. आप बोलते हो ना पहले माला, दूसरा माला, फर्स्ट स्टोरी, सेकंड स्टोरी, थर्ड स्टोरी, है ना. सो दे आर लिविंग but they are living in different apartments, right? So we will learn all these things in this only. First I will read for you, then I will explain you. People live in different type of houses. Are you agree with me? People lives in different type of houses. Yes, we all have the different type of houses. किसी का भी house किसी भी house किससे same नहीं होता. We all have different type of houses. We all are living different place. We all are living in different type of houses, है ना. Then some houses are made up of mud, leaves, straw and bamboos. Yes, it is very much correct written over here. And what you have to do, you have to underline these line number 1. You have to underline this line number 1. Some houses are made up of mud, leaves, straw and bamboos. These 4 words you have to make it underline, right? See, look at this picture. Picture number 1. This is a picture of hut. And when we will make a hut, we use all these things. We need mud, we need leaves, we need straw, we need bamboos, है ना. When we will talk about a kacha house, then definitely we need all these 4 things. Without these 4 things we cannot get a kacha house. We can't make a kacha house, right? So they are called kacha house. They are called kacha house. Some house are made up of mud, leaves, straw and bamboos. They are called kacha house. This word kacha house is written in red, written with reading. So you have to underline this word kacha house. What is kacha house? Where you have seen this kacha house? How is it made? कैसा होता है? How we can see? Where we can see? कैसे बनता है? What is the reliability of this house? How much strong it is? है ना? कच्चा house. Have you heard this word kacha? Yes, you have heard this word kacha when you was learning about the raw material which is related chapter 3. Clothes, raw material, कच्चा माल. You have heard this word कच्चा, है ना. You have heard this कच्चा. Yes, you heard this word कच्चा in your previous lectures which is related to chapter number 3, clothes. So tell me one thing. When you have you seen any village? Have you seen any कच्चा house? When you will go for roaming purpose, है ना. That time while moving, जब आप सड़क पर जा रहे होते हैं, आपकी गाड़ी सड़क पर जा रही होती है, आप बहुत सारे ऐसे गांव में जो घर आते हैं, वो घर आपने देखे हैं. Have you seen that houses? That is called kacha house. That is called kacha house. They are not looking like our houses. वो हमारे घर की तरह दिखने में नहीं होते हैं, है ना. वो किस चीज़ के बने होते हैं? वो कौन सी चीज़ें यूज़ की हुई थी उनको बनाने के लिए? दे यूज़ द मड, लीव्स, बैम्बूज एंड ऑल दीज थिंग्स. ठीक है. कच्चा हाउस जो होता है ना बेटा, स्पेशली वी कैन फाइंड आउट द कच्चा हाउस स्पेशली इन द विलेजेस एरिया. स्पेशली इन द विलेजेस एरिया, जितने भी जो गांव होते हैं ना बेटा, मैक्सिमम नंबर ऑफ द kacha house we can get over there. But don't forget one thing. Nowadays people, those who are living in villages, they are also making the pakka house. ऐसा नहीं है कि जो लोग गांव में रहते हैं वो हमेशा ही कच्चे घर में रहते हैं, वो कच्चे हाउस में रहते हैं. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. आजकल तो दे आर ऑल्सो वेरी मच अवेयर, है ना.
उनको भी चीज़ें समझ में आने लगी हैं, वो भी पढ़ाई लिखाई शुरू करने लगे हैं, तो दे ऑल आर ऑल्सो स्टार्ट्स यूजिंग पक्का हाउस, है ना। सम आर यूजिंग पक्का हाउस, सम आर यूजिंग कच्चा हाउस, ठीक है। सो आई विल मेक यू द डिफरेंस बिटवीन कच्चा हाउस एंड द पक्का हाउस, एंड आई विल टेल यू, I will give you more information about the kacha house and the pakka house. But yes, one thing is definite is that you can see kacha house in the villages only. You will get number of kacha house in the villages area, right? So how many things need to get a kacha house? Mud, leaves, बैम्बूज एंड स्ट्रिक्स, ठीक है। लकड़ियाँ, जो लकड़ी होती है, जो मिट्टी होती है, और गाय का जो गोबर होता है, बेसिकली इन सारी चीज़ों से मिलकर एक कच्चा हाउस बनता है। एंड सी यू हैव रूफ, यू हैव टेरिस एट होम, आपके सबके घर में तो पक्की छत होती है। वी आर गेटिंग दिस, है ना, वी आर गेटिंग दिस छत फ्रॉम सीमेंट एंड आयरन। ये तो लोहे और सीमेंट की बनी बहुत मजबूत छत होती है। बट पीपल दोज हु आर यूजिंग द कच्चा हाउस, दे डोंट हैव दिस टाइप ऑफ टेरेस, दे डोंट हैव दिस टाइप ऑफ छत, है ना। दे हैव द छत बट दे आर यूजिंग कबेलूज, दे आर यूजिंग कबेलूज, है ना। वो गाँव में कबेलू का यूज़ करते हैं बेटा टू गेट द छत को बनाने के लिए, छत को पाने के लिए दे आर यूजिंग कबेलू, ठीक है। और टीन शेड भी, समटाइम दे आर यूजिंग कबेलू, समटाइम दे आर यूजिंग टीन शेड। टीन से भी वो लोग शेड बनाने की रखते हैं, कोशिश करते हैं, राइट। सो कच्चा हाउस आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। वन थिंग इज नॉट वेरी मच गुड अबाउट दैट कच्चा हाउस इज दैट कच्चा हाउस इज नॉट रिलायबल, कच्चा हाउस इज नॉट वेरी मच स्ट्रॉन्ग, है ना। We can to stay, we can to live, we can survive with kacha house, but it is not very much strong. They are generally found in villages. Huts are example of the kacha house. Yes, I already told you, I already explained you. You can find the kacha house in the villages only. You can find the kacha house in the villages only. See, when you will go to Indore, so from Khargon to Indore, on the way you can find so many kacha houses. You can find, see, from Khargon to Indore, है ना, what is the distance? I think that distance is near about 110 kilometers. The distance between Khargon to Indore is near about 110 kilometers, right? So in this range, when you will go to Indore, you will find out so many kacha houses. You will cross so many villages. आप बहुत सारे गाँवों को क्रॉस करने के बाद you will reach to Indore. So you can see so many kacha houses between Khargon to Indore, है ना। So I am giving you a little task, a little work when you will go to Khargon to Indore or any other place. और इसके अलावा भी जहाँ पर भी कहीं आप जा रहे हैं, you can see the कच्चा house, है ना। So अगर आप you are using your 4-wheeler, suppose you are using your 4-wheeler to going out, right? Maximum students are using their vehicles for going out, है ना। Nowadays तो everybody is using own vehicles. हम सब because of this coronavirus, buses are not moving on the streets. Buses are not running, not moving, है ना। So we all are using our own vehicles. So tell to your papa, please stop the car near, park your car, है ना। Then Papa, I want to see that kacha house. You can tell to your papa. Papa will definitely make you see that kacha house. आपके पापा ज़रूर से आपको वो कच्चा हाउस दिखाएंगे. How can kacha house prepared? You can talk with any village people. They can tell you
they can give you more information how they are making this kacha house, है ना, what precaution they have to take when rainy season will come, because in summer and in winter season they can stay nicely, in that kacha house, but it is very difficult to live in, especially in rainy season. It is very difficult to live in that kacha house, especially in the rainy season. It is very difficult because जब बारिश होती है ना बेटा, जब बहुत तेज़ बारिश होती है तो जो कच्चे हाउस होते हैं उनमें से जगह जगह से पानी टपकना स्टार्ट हो जाता है, जगह जगह पानी टपकना स्टार्ट हो जाता है, उन लोगों के घरों में पानी भर जाता है. सो it is not very much easy to survive in those kacha houses, especially during rainy season. ठीक है. So little task I am giving you कि जब भी आप कहीं, whenever you will go outside from Khargone, you can see many kacha houses. Why? Because you will cross many villages. When you will go out, you will cross many villages. So you can tell to your papa, please stop the car, stop the vehicle. I want to see that kacha house because my ma'am told me that you can see the kacha house in the village only, and I want to take some information from that village people so they can give you more information about the kacha house, and then you will talk about especially the rainy season. आप उन गांव में रहने वाले लोगों से ज़रूर से ये पूछना कि ड्यूरिंग समर सीजन एंड ड्यूरिंग विंटर सीजन दे कैन स्टे नाइसली, दे कैन सर्वाइव इन दैट कच्चा हाउस. बट अगर रेनी सीजन में ज़्यादा बारिश होती है तो हाउ दे कैन सर्वाइव? दे डेफिनेटली दे ऑल विल फील प्रॉब्लम, दे फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. ठीक है. सो आप क्या करेंगे, आप उन लोगों से एटलीस्ट कोशिश करना कि अगर रेनी सीजन आता है, बहुत बारिश होती है, तो आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ठीक है. सो दिस ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द कच्चा हाउस. नाउ माय टाइम इज गोइंग टू ओवर. टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे, एंड वी विल मीट in our next lecture with new information, with different information, and I will tell you about what is different between kacha house and pakka house, what is pakka house, what is Bangalore, what is apartment, and all these things. I will explain to you each and everything. ठीक है. So till then, bye bye, have a nice day, and don't forget one thing, you sent your notebook in the school campus, in the school premises for corrections, है ना. So nowadays I personally try, I will not give you any writing work, especially in this week. स्पेशली इस वीक में बेटा मैं आपको कोई भी राइटिंग वर्क नहीं दे रही हूँ, है ना, ताकि आपकी जो नोटबुक्स वी हैव, you will not face any problem. ठीक है. So try to send your notebook. Bye bye, have a nice day, stay home, stay safe, and celebrate festival. But be aware, be careful, and don't miss your videos. Watch your videos regularly and do study continuously. Don't compromise with your studies. Never ever compromise with your studies. So it's enough from my side. Bye bye, have a nice day. God bless you all. Bye.